Hello students, welcome to my YouTube channel Genius Mind. Through this channel, I will discuss some unique and important points on the topic related to 12 different subjects. इसके साथ साथ मैं कुछ टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा. आज मैं डिस्कस करूंगा सेल पर, विच इज़ रिलेटेड टू द सेल बायोलॉजी. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं सेल को डिफाइन करूंगा. सेल की जो कॉमन डेफिनेशन होती है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा. मैं सेल की एक मॉडर्न डेफिनेशन को शेयर करूंगा. Cell is the structure consists of membrane covered mass of protoplasm of which all the organisms are formed. स्टूडेंट, मैं डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज डिस्कवरी सेल से रिलेटेड ऑलमोस्ट हम सभी पॉइंट्स जानते हैं. बस एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को शेयर करना चाहूँगा. When Robert Hooke discovered the dead cell of cork, he also stated the function of the cell. According to him, the cells are involved in the conducting fluids. In 1674, the cell was observed again by one scientist named Antony van Leeuwenhoek, and the first living cell was discovered. Actually, Antony van Leeuwenhoek observed many single-cell organisms. स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे सेल मॉर्फोलॉजी पर. मैंने यहाँ मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर सेल्स के मेंशन किए हुए हैं. सेल शेप, सेल साइज एंड थर्ड वन इज लाइफ स्पैन ऑफ सेल. बेसिकली हम मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर से कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड डिस्कस करूँगा. स्टार्ट करूँगा सेल शेप से. एज वी नो दैट दे आर द नंबर ऑफ शेप ऑफ सेल्स आर ऑकर्ड बट दे ऑल आर डिपेंड अपॉन सम फैक्टर. मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फंक्शन, पोजीशन, सेल बॉडी और द फैक्टर्स ऑन विच सेल शेप डिपेंड. हाउ द सेल शेप आर डिपेंड अपॉन फंक्शन. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, RBC आर globular and biconcave in shape so that it can pass through the narrow capillaries of the cell. स्टूडेंट, जिस वे में सेल को पोजीशन प्रोवाइड होता है उसी वे में सेल शेप को भी अडॉप्ट करती है. पॉलीगोनल इन कॉर्टिकल सेल्स एंड सेंसरी टिश्यूज आर columnar. Now cell wall mainly provide rigidity to the cell. The next morphological factor is cell size. There are range of size of cells. For example, bacterial cell size ranges from 0.3 micrometer to 5 micrometer, but the smallest cell have a diameter of 0.3 micrometer, and it is of mycoplasma. It is also called PPLO. But just like cell shape, cell size are also depend upon some factor. The first factor is metabolic activity. The metabolic activity of smaller cells are very high and low of larger cells. For example, sperms are metabolically active and eggs are inactive. The next factor is nucleocytoplasmic ratio. Actually, nucleus controls the metabolic activity of the cell, and metabolic activity of the cell, smaller cells are very high. That means nucleocytoplasmic ratio of the smaller cells are also high. The next one is inflow of materials. The essentials, molecules and substances reach every part of the smaller cells, but in larger cells some part get starved of materials. Students, the next morphological factor is life span of cells. Students, मैंने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंसेस मेंशन किए हुए हैं. The first difference in prokaryotic cell is that the cell possesses one envelope system of organization, and in eukaryotes it is two envelope system of organization. What is one or two envelope system of organization? Actually, the plasma membrane is present around the cell in prokaryotic cell, not around the cell organelles. This is called one envelope system of organization. But in eukaryote, the cell membrane is present around the cell as well as around the cell organelle. This is called two envelope system of organization. The second point is DNA is naked or without histone protein, but in eukaryote DNA is wrapped around histone. The third point is plasmid may occur in prokaryotic cell, but in eukaryotic cell plasmid is present in some species. The fourth point is cell membrane have infolding called mesosomes, but in eukaryotic cell it is absent. Students, next topic is section of cell. Cell is divided into three sections. मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. It is outer envelope, cytoplasm and subcellular structure and nucleus.
आउटर एनवेलप इंक्लूड सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, मैंने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पर अलग से एक वीडियो क्रिएट किया है, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। द नेक्स्ट सेक्शन इज साइटोप्लाज्म एंड सबसेलुलर स्ट्रक्चर। सबसेलुलर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। अब मैं साइटोप्लाज्म को डिफाइन करूंगा। एक्चुअली साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस in which all the structure, organelles and the components are present. And the last one is nucleus. स्टूडेंट्स, मैंने हर सिंगल सेल ऑर्गेनल का वीडियो क्रिएट किया है, उस पर डिटेल में डिस्कस भी किया हूँ, सो यू कैन वॉच इट एनी टाइम। न्यूक्लियस पर भी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है, उसको डिटेल में डिस्कस किया हूँ।